Hey YouTube, how's it going? Today we'll be talking about Orto Parisi Seminalis, so stay tuned. Seminalis was launched in year 2016 and the brand Orto Parisi was created in 2014. The nose behind this house is Alessandro Gualtieri, so he is also co-founder of Nasomato, as you all know. Nasomato is quite expensive. The pricing are a bit more steep as compared to Orto Parisi. Plus, Orto Parisi comes in 50 ml bottle, while Nasomato is just 30 ml. So yeah, वो ज़्यादा expensive है. This is relatively cheaper, and you are getting more juice as well. So, but since the perfumer is same, you can definitely get nuances between the Nasomato and Orto Parisi. So without further ado, I'll show you the box. This is quite simplistic box, brown color. It looks more like a tester box. You get some information over there. Then on the sides. So yeah, presentation wise, I didn't like it. Quite minimalistic. Plus it is quite boring as well, because brown box looks like a tester box to me. The bottle inside sits quite snug, because I don't know how they managed to create these, as you can see, crisscross pattern. So this is the bottle. You don't get any sort of brochure or pamphlet inside. Bottle काफ़ी heavy है, considering it is just a small 50 ml bottle. The glass is quite thick from the bottom, and एक साइड पे Orto Parisi लिखा होगा, and अदर साइड पे जो भी इसके वेरिएंट है उसका नाम रहेगा. Like this is the Seminalis, then they have that Bergamasque, then Megamare, etc. It is in parfum concentration, 80% volume. The cap is really heavy because it is metal, and ऊपर इसके stone जैसा कुछ है. I doubt it is a stone, but I don't know, maybe polished plastic, but gives nice touch to the cap. It feels really heavy and classy. Baki bottle, it is quite minimalistic, but it is good. So now on to the sprayer. Sprayer इसका काफ़ी अच्छा है. It shoots the juice quite long way. अच्छे से spread नहीं करता, but it gets the job done. Not bad, not good, but quite average. So regarding the smell, ये काफ़ी unique and अच्छी smell करता है. You are immediately greeted with a milky almondy type of vanilla-ish sandalwood fragrance, which is quite invigorating. I would say this is the creamiest sandalwood fragrance I've ever encountered. It is quite unique. Basically, sandalwood वाली fragrances आपने बहुत try की होगी, but this is quite unique. इसके पीछे भी एक अलग story है. I have many bottles in decants, so इस टाइप के जो प्लास्टिक वायल्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं, एंड बॉक्स के अंदर ही पड़े रह गया था, एंड इट वाज ऑफ अटेलियर्स सेंट्रल कार्मेन. सो विथ टाइम उसका अल्कोहल उड़ गया. इट गॉट इवेपोरेटेड एंड ऑल आई हैड वाज जस्ट टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द ऑयल. सो मैंने उसके अंदर वाटर भर के एंड देन आई जस्ट ट्राइड टू मिक्स इट अप, एंड जस्ट वही पानी मैंने स्प्रे किया था, बट आई वाज लाइक वाओ,
बहुत अच्छा उसका फ्रेगरेंस था. इट वॉज basically a sandalwood fragrance and very exotic smelling. So I was on a hunt, but since it is discontinued, I had that itch of getting sandalwood fragrance because आज तक मुझे sandalwood का note इतना अच्छा नहीं लगा था. Then someone suggested me about this Seminalis. He told me that it is the creamiest sandalwood fragrance you'll ever encounter. So I was quite fascinated by the description. So big shout out to Mr. Ashutosh from Perfume Hut for getting me a bottle of it on a good deal. So yeah, ये मुझे try करना था and it is really nice fragrance. Basically it is not at all like that Central Carmen के जो आपको regular sandalwood वाले fragrances मिलते हैं. For example, हटकोरा वुड by the house of अजमल. इसका भी मैं अलग से रिव्यू बना दूंगा in case you want it. इसके अंदर जो सैंडलवुड है, वुडी फ्रेग्रेंस है, little bit of rose in it and it is quite unique and exotic smelling. I love it actually. But yeah, ये लेने के बाद में वो क्रेविंग जो थी सेंट्रल कार्मेन की वो हट गई है fortunately. And this thing is quite unique because creamy almondy vanilla type का fragrance है and the lasting and projection is quite good. Being a perfume, you can expect very nice like 10 to 12 hours of lasting longevity. And yeah, projection थोड़ा कम होगा as compared to the regular EDTs you might be using, but it is good. On fabric it lasts and lasts, so that's again a nice thing. Now on to the downside of the perfume. It is quite expensive being a 50 ml bottle and presentation भी इसका इतना कुछ खास नहीं है. The box is quite generic like टेस्टर का बॉक्स होता है वैसा है. सो या यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फ्लैशी स्टफ एंड इसका प्राइसिंग भी लाइक गिव और टेक यू विल गेट इट अराउंड 9 to 10,000 rupees for just 50 ml bottle, even more because अभी सबकी रेट्स ज़्यादा हाई हो चुकी है. बट या यू कैन शॉप अराउंड एंड गेट अ गुड डील ओवर इट. अनदर थिंग इसकी ये है कि ये क्वाइट मैच्योर स्मेल है. इट इज़ नॉट फॉर यंग किड्स एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम नॉट लविंग इट. यस, इसकी जो स्मेल है वो अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, बट considering my age I just can't pull it off. If you are a grown up man, a mature man with a good personality, then you can definitely wear this on the classy events like maybe meetings as well. I just wore it once on a business meet with my dad and I wasn't feeling that much of confident because I'm not used to wearing such type of scents. It isn't gourmand, but still जो वैनिला एंड आलमंड का जो नोट आता है बर्न्ट टाइप का along with the sandalwood, it is quite linear. शुरू से ड्राई डाउन तक बहुत ही कम चेंज आता है इसमें, which is good for some and कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है. Like personally मुझे थोड़े से सेंट जो डेवलप होते रहते हैं वो थोड़े अच्छा लगता है. लाइक स्टार्टिंग में थोड़े अलग है, देन मिडल नोट्स जो आता है उसमें थोड़ा सा अलग हो गया, ड्राई डाउन में थोड़ा स्मेल उसका चेंज हो गया. सो लाइक वाइज अगर चेंजेस आते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लीनियर सेंट. बट या अगर लीनियर किसी को पसंद हो कि जैसे ओपनिंग, बिकॉज मैनी परफ्यूम कंपनीज मेक परफ्यूम्स के जो उसके जो टॉप नोट्स होते हैं, जो ओपनिंग उसकी होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई करते हैं सो दैट लोगों को वो पसंद आए. बिकॉज वॉट यू डू इज़ लाइक गो एंड स्प्रे इट, देन यू स्मेल इट एंड तभी आप जज कर लेते हो उसको कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है. यू डोंट इवन लेट इट
settle on your skin or the test strip. थोड़े टाइम बाद में मे बी उसकी स्मेल चेंज हो जाए एंड मे बी आपको पसंद भी आ जाए. सो या दैट्स द थ्योरी. एंड बाकी या इसके लिए रिव्यूज़ भी आई हैव सीन ऑन द फ्रेगरेंटिका. नोट्स आरंट मेंशन्ड बट I don't think this is any type of complex scent. So creamy sandalwood fragrance आप इसको कह सकते हैं. लोग इसको dirty भी कहते हैं, like dirty animalic. I don't find it like that. Some people are just spewing bullshit like it smells like semen or something. Just because the name is Seminalis doesn't mean that this smells like semen. Okay. ये तो मतलब हद ही हो गई. मेरे पास ये सेक्रिएशंस मैग्निफिक है विच इज़ सपोजिडली वर्स्ट स्मेलिंग परफ्यूम बिकॉज यू कैन सी द रिव्यूज़. एंड अगर आप चाहोगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना लूँगा स्पेशली. बट वो उसके लिए अगर आप बोलो कि उस टाइप का है, ऑल्दो उसके अंदर भी मुझे वैसी फ्रेग्रेंस नहीं आती. दैट टू स्मेल्स लाइक ब्लड एंड स्वेट एंड सलाइवा. बट या वॉट एवर, ये कुछ रिव्यूज़ जो होते हैं उसके बेसिस पे आप प्लीज़ मत जाइएगा. एंड या एक कोई रिव्यू मैंने ये भी देखा था कि दिस स्मेल्स एरोटिक एंड ऑल दैट. इन माय वर्ल्ड किसी को भी ये इतना अच्छा नहीं लगा. लाइक डैड को इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी थी, आई डोंट नो हाउ, बट इसकी फ्रेग्रेंस स्निफ करके उनको लगा कि प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन द स्मेल इटसेल्फ. एंड बाकी सिस्टर एंड फ्रेंड्स को मैंने जब बताया ये, तो दे सेड या इट्स गुड बट नॉट ग्रेट. सो I'd suggest कि एक बार आप ट्राई कर लो बिफोर बाइंग इट. एंड इट इज़ क्वाइट मैच्योर सेंट, सो यंग lads like me should stay away from it. या अगर आप बड़े हो लाइक 30 and plus, I'd suggest 35 तक की एज के अगर हो तो you can definitely wear this. It is good and quite unique as well. And as this perfume is expensive, ये थोड़ा यूनिक और ज़्यादा बन जाता है. लाइक एक तो एक्सपेंसिव है ही ऑलरेडी, प्लस इसकी सेंट प्रोफाइल भी थोड़ी यूनिक है. सो यू डोंट स्मेल लाइक समवन एल्स, सो विच इज़ प्लस पॉइंट. सो ऑल इन ऑल आई विल गिव दिस सेंट 7.5 फ्रॉम माई साइड बिकॉज मे बी इट डिडंट वर्क फॉर मी, और मे बी मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रह गई थी इसके लिए सैंडलवुड बेस्ड फ्रेग्रेंस पे. लाइक आई सेड, मुझे सैंडलवुड वाले फ्रेग्रेंसेस इतने अच्छे नहीं लगते, बट सैंडल कारमेन वाज लाइक हेड टर्नर फॉर मी. एंड उसकी जो क्रेविंग थी वो मैंने हटकोरा वुड से सेटिस्फाई कर ली. दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट बट इट्स ओके, इट्स गुड, डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब. एंड ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए. टिल देन बाय.